planning a question. Okay, remember S21 question paper 5-3. Okay, so first thing, he's trying to decompose it slowly. Okay, at room temperature to give water and oxygen. Initial rate of this reaction can be increased by the addition of a metal oxide as a catalyst. So he's probably adding some catalyst to try to increase the initial rate of the reaction. A student is asked to investigate which metal oxide catalyst is best at increasing the initial. So this is what he's investigating, that which metal oxide catalyst is best. And he wants to increase the initial rate of the reaction. So which catalyst is going to increase the initial rate of the reaction? By using a method which involves the collection of oxygen gas. Now rate is what happens. Rate is basically, what is rate? Rate is any change happening with respect to time. How quickly that change is happening. So in this case, what is rate? It's you're going to collect gas. So you're going to figure out how quickly that gas is being collected. Now the student is provided with the following metal oxides. So there are a bunch of copper 2 oxide, iron 3 oxide, manganese 4 oxide, nickel 2 oxide, titanium 4 oxide. So state the independent variable. The independent variable is the metal oxide. You're going to choose the metal oxide. And so that's your independent variable. And what will depend on it? What will depend on it is the rate. Okay, how quickly the reaction happens. So what did I say? Rate is basically, the dependent variable is going to be, you're going to measure 1 over time of that. Okay? You're going to measure how quickly a certain amount of oxygen gas gets produced. So time taken for a certain volume of oxygen gas. Yeah, that's your dependent variable. State 2 variables that need to be controlled. Now, here is a question, this is summer 21 question paper 5-3. S21 QP 5-3. Now, whenever you have a rate of reaction question, so your variables that need to be controlled, you need to control any variable that would alter the rate of the reaction. So one variable that needs to be controlled is temperature. You can always control temperature. फिर और क्या control करना है? You've got to control, I guess, the concentration of H2O2. That's because you're not investigating concentration. So concentration of H2O2. So और क्या होता है that needs to be controlled. 5 factors that affect rate, right? There's temperature, there's pressure. Pressure would not be that important because it's aqueous, so that would probably not affect the rate of reaction. Surface area, okay, so you could the surface area of the catalyst, so that affects the rate of reaction. So you need to control that. All catalyst, all metal oxides that are going to be added as catalyst, they got to have the same shape and size. Concentration bhi ho gaya, temperature, catalyst is itself the independent variable. So these are the 3 factors that probably need to be controlled. Draw a label diagram of the assembled apparatus that could be used to carry out these experiments. The apparatus should allow how accurate recording of the oxygen produced. So iske andar what you're going to do is you're going to take a conical flask. Okay, there's going to be H2O2. You can make sure that apni drawing mein there are no gaps. Okay, so make sure there are no gaps, and
oxygen gas needs to be collected. ठीक है, so oxygen gas can be collected uh, using a gas syringe. That would probably perfectly work. ठीक है, there's nothing wrong with oxygen gas being collected. तो आप oxygen gas collect करोगे? Sir, then when do you collect oxygen over water? Actually, what you can collect. Remember gases collection में वो क्या था कि वो नोट्स भी खोल रहा था P5 के. ठीक है, there are many methods of collecting gases. ठीक है, किधर है P5? 1 second. इसकी मतलब नहीं है. ये वाला. अच्छा, over water you can you collect oxygen gas over water? I think you can because it's an insoluble gas. ठीक है, तो that would also work कि यहाँ पे ना there's gas collection ये. ठीक है, so there's gas syringe. You can, because you have to measure the volume of gas with respect to time, so you can do this as well over water. Over water का सिर्फ issue होता है if the gas is soluble. In this case, it's not soluble, so you could use this diagram as well. There are other methods of collecting gases as well, and that's upward and downward delivery. That's not going to work because you wouldn't be able to see oxygen gas, and you wouldn't be able to measure the volume of oxygen gas in upward and downward delivery. ठीक है, so that would probably work. तो gas syringe अभी हम use कर लेते हैं. अच्छा, so the oxygen gas would get produced, and this is graduated gas syringe. ठीक है, it's going to have a lot of markings. यहाँ पे oxygen gas collect हो जाएगी. You need a stopwatch to go with it, right? तो अब पता नहीं इसमें you can just add a stopwatch. ठीक है, because more irrelevant. I don't think they'll give marks for that. Now the thing is, how do you add the catalyst? Remember, whenever there's gas collection, you don't need to open the apparatus. ठीक है, so you need to develop a method कि जहाँ पे the catalyst gets added automatically. So there's one, ये इधर यहाँ पे मैंने notes में दिया हुआ भी है. There's one method which is that you place the catalyst in a tube and you sort of put it standing over there, and then by tilting it, you can the tube might fall into the just small tube होगी ना, that will fall into the acid or whatever the solution is. In this case में you've got H2O2. So what you can do is the catalyst or the metal oxide, which is the catalyst. So all you need to do is to start the reaction without opening the apparatus. You just tilt the tube or tilt the apparatus so that the tube falls into the H2O2. ठीक है, ये clear है? So we've labeled it. Is this clear? Or labeled apparatus. So this is your measuring syringe. आप इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये ट्यूब वाला पार्ट. जी सर, डायग्राम चूज करने वाला पार्ट. देखो, उससे कहा था कि ये रिएक्शन है ना, इन्वेस्टिगेट वो क्या कर रहा है. मेटल ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, व्हिच वन इज द बेस्ट मेटल ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, राइट? तो प्रॉब्लम है कि you're measuring the speed at which the oxygen gas is getting produced. ठीक है, तो how would you add the catalyst to this H2O2? क्योंकि एकदम से रिएक्शन शुरू हो जाएगा, खोलना पड़ेगा ना ऊपर से. You would have to open it and then the reaction would proceed, right? Yes sir. नहीं, जब ये उसको जब आप हिलाओगे ना, थोड़ा सा उसको शेक कर लो, तो ये ट्यूब जो है it will fall into the H2O2. तो बात समझ आइए कि आप कैटलिस्ट को उसके अंदर पहले से प्लेस कर दोगे, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो ट्यूब के अंदर है. तो you just shake it a little bit, the tube will fall into the H2O2 and the reaction would start. That's when you start the stopwatch. ठीक है, तो ये जितने भी गैस कलेक्शन के
जहाँ पे गैस कलेक्शन इन्वॉल्व होगी ना, मेक श्योर कि हाउ डू यू मिक्स द रिएजेंट्स, मेक श्योर यू मिक्स इट विदाउट, उसमें दो चीजें हैं, ठीक है। इसके बारे में ना वो दो चीजें पूछा है जब गैस कलेक्शन के बारे में आएगा। इस केस के अंदर तो शायद ना पूछे, लेकिन इज गोइंग टू आस्क यू टू थिंग्स। वन इज he's going to look at how you mix, how you're mixing the ingredients, ठीक है। So this is one way of mixing it without opening the apparatus at any point, ठीक है। The other point is वो कभी बार कहता है कि जी वो फर्स्ट जो गैस सैंपल्स होते हैं उनको रिजेक्ट करता है, ठीक है। वो इससे रिजेक्ट करता है कि जो इनिशियल गैस सैंपल्स होते हैं ना, दे आर कंटामिनेटेड विद एयर, जब ये इसके अंदर कुछ नहीं होगा, रिएक्शन नहीं हो रहा, सो देयर इज एयर इन इट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिंस इट्स अ रेट क्वेश्चन, that is not really relevant over here, ठीक है। लेकिन ये क्लियर है, apparatus is this clear? Yes, sir. तो फिर आगे आ जाओ कि उसके बाद क्या कह रहा है वो, इसको भी लेबल कर दो, this is your conical flask. What measurements need to be recorded during the course of each experiment to allow the initial rate to be determined? तो initial rate क्या measure करना है? What measurements need to be recorded? Volume of oxygen record करना है जो collect हो रहा है with respect to time. How is the initial rate determined? बस दोनों को divide कर दो कि let's say 5 seconds के अंदर this is the volume of oxygen gas, let's say 60 cm cube. So what is your rate? It's 60 cm cube divided by 5 seconds, and that's going to give you 12 cm cube per second, right? So that's your initial rate. फिर वो कह रहे हैं to allow the initial rate to be determined. The initial rate, ठीक है। How can the student ensure the results are reliable? अच्छा, रेट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। रेट के ऊपर ना वापस उसी नोट्स पे, it's a lot if you plot a graph. हमारे रेट के क्वेश्चन करेंगे। रेट के अंदर ना, when you're doing a rate of reaction question, it's a lot better if you plot a graph. और खास में initial rate के लिए you're going to draw a tangent. So what you're going to do is, it's better कि time के respect से ना you plot the volume of H2 gas every 5 seconds. एक point के बाद ना the H2 gas will, इस वाले केस में O2 gas है, ठीक है। So at a certain point the O2 gas will stop getting produced. So it would be a lot better if you had plotted a graph, क्योंकि उससे ना anomalous points निकल जाते हैं। क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर अगर आप डिपेंड करो ना, तो मे बी ये जो पहला पॉइंट आपने प्लॉट किया ना 5 सेंटीमीटर क्यूब वाला, देयर इज अ चांस कि देयर मस्ट बी सम स्मॉल टाइनी एरर इन इट, ठीक है। तो लेट्स से 5 cm क्यूब के ऊपर यू आर गेटिंग दिस थिंग, 10 cm क्यूब के ऊपर यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। 15 के ऊपर यू आर गेटिंग दिस मच H2 गैस, ठीक है। देन यू आर गेटिंग this, it becomes constant, right? So that means the reaction has stopped. जब आप ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ ऑटोमेटिकली इज एन एवरेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स के ना करीब से गुजरता है। सो दैट काइंड ऑफ इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी कि मे बी अगर आपका जो पहला पॉइंट होता ना, मे बी इफ योर फर्स्ट पॉइंट वाज स्लाइटली ऑफ, ठीक है, but when you plotted the graph you could spot that anomalous point and you can sort of ignore it, ठीक है। तो idea clear है कि why graph is better than taking a single value. Is that clear? Yes, sir. और फिर आप टेंजेंट उसका प्लॉट करो। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इट्स अ लॉट बेटर टू एक्चुअली गो विद अ ग्राफ, और इसके अंदर भी मार्किंग स्कीम है ना, मे बी इज प्रॉब्ली गोइंग टू डू दैट कि भी, तो आपने यहाँ पे प्लॉट करना है वॉल्यूम ऑफ O2 एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। So don't take one value because one value can be unreliable. तो वो एक वैल्यू से काम नहीं चलाना। Make a graph and then draw a tangent. Sir? हाँ जी।
सर एक्स एक्सिस पर तो वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। कि रिएक्शन शुरू हुआ है ना, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना। सर आपने 5 cm³ लिखा हुआ है ना यहाँ। अच्छा हाँ सॉरी, वो 5 सेकेंड्स था, सॉरी। ठीक है, 5 सेकेंड्स के ऊपर इतना ऑक्सीजन गैस, फिर इतना 10 सेकेंड्स पे ये, 15 पे ये, ठीक है, ये 5 सेकेंड्स था, ठीक है, क्लियर है। यस सर। And then draw tangent, right? Is that clear? यस सर। अच्छा, अब ये कि next part. How can the students ensure that the results are reliable? How would you know कि results ठीक है? मीन How can the student ensure that the results are reliable? मतलब how do you increase the reliability के? एवरेज या मीन? नहीं, reliable का मतलब है कि repeat. ठीक है, एवरेज से ना you get closer to the true value, लेकिन जब वो reliable की बात करते हैं ना, that is you repeat the experiment. If you get the same result, that means it's reliable. ठीक है, so if you get the same result, that means your results are reliable. अच्छा, तो सर आप एवरेज कब लेते हैं? किस पे? लाइक एवरेज का वर्ड कब यूज करते हैं? तो एवरेज आप लेते हो टू गेट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। एवरेज मतलब लेट्स से आपके पास 3 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। लेट्स से you're getting for in the first 5 cm³ you're getting, so first 5 seconds, एक experiment you got 10.1 cm³, in the other experiment you're getting 9.9 cm³, in the third experiment पहले 5 seconds में you're getting let's say 10.05 cm³, right? तो जब आपके पास 3 रिजल्ट्स है ना, तो you want to get close to the true value, ठीक है, so you take the average के भी तीनों पॉइंट्स है, so you take the average, ठीक है। तो सर एग्जामिनर हमसे कैसे पूछेगा ये? नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो बात करें रिलायबल रिजल्ट्स, ठीक है। रिलायबल रिजल्ट्स हैं कि इफ यू रिपीट एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे ऑल दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स आर काइंड ऑफ रिपीटेबल, राइट? तो दैट मींस मतलब वो रिपीट ही हो रहे हैं ना, दे ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू। अगर आपका डेटा आ रहा होता, पहले वाले में आता 8 cm³, सेकेंड वाले में 9.9 आता, थर्ड वाले में आता 14 cm³, ठीक है। नाउ दैट वुड इंडिकेट दैट योर रिजल्ट्स आर नॉट रिलायबल, ठीक है। None of them are reliable because you can't figure out which one is the correct one. अब यहाँ पे ना एवरेज लेने का कोई फायदा नहीं है, because even if you take the average, your results initially are not reliable, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि इनमें से 2 सेम हो, but one of them is slightly off के, या 7 cm³ वाला 7.2 cm³, you would immediately know कि this is your anomalous point, ठीक है। तो एवरेज आप लेते हो हमेशा जब आप रिपीट करते हो ना एक्सपेरिमेंट, एंड यू वांट टू लेट्स से प्लॉट वन ग्राफ, ठीक है, तो आप फिर अपने सारे डेटा पॉइंट्स का फिर एवरेज लेते हो टू गेट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, राइट? लेकिन रिलायबिलिटी इज टोटली समथिंग एल्स। मतलब डिफरेंस समझ आया ना रिलायबिलिटी का? यस सर। तो वो कह सकता है कि वो 3 एक्सपेरिमेंट करे, वो फिर आपसे कहे कि अब एवरेज निकालो ना, लेकिन एवरेज में यू नॉट गोइंग टू ऐड द अनरिलायबल रिजल्ट्स, ठीक है। जिसका टाइट्रेशन में वो अक्सर वो एवरेज लेने वो कहते हैं ना। तो यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करने के बाद ना, व्हेन यू रिपीट देम 3-4 टाइम्स, यू नॉर्मली टेक द एवरेज, ठीक है। लेकिन उसके अंदर यू ऑलवेज रिमूव द अनरिलायबल रिजल्ट्स। लेकिन अगर सारे रिजल्ट्स ही अनरिलायबल हैं, तो आपकी फिर एवरेज लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, once the reaction is finished, how can the student demonstrate that the metal oxide has not been affected by the reaction? तो किस तरह पता लगेगा metal oxide is a catalyst and does not take part in the reaction? वो किस तरह पता लगेगा? कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं होगा। नहीं, मेटल ऑक्साइड है ना, weigh the mass, उसकी mass weigh करो, if there's a decrease in mass, उसका मतलब है it got used up. If there's no decrease in mass, to weigh the metal oxide before and after the experiment and compare, ठीक है, clear है? सर एक क्वेश्चन ले आया क्या उसके ऊपर था?
क्या था? F. अच्छा, suggest an alternative method to investigate these. अच्छा, तो वो कह रहे कि that does not include the collection of gas. तो रेट क्या होता था? रेट होता था एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो रेट इज एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू. तो मुझे दूसरा बता दो कि और क्या चेंज मेजर कर सकते हो. What could be another change? ठीक है, the other change could be mass. हाँ, ठीक है. तो mass भी change हो रहा है. So नीचे वो रख दो wing balance and you can measure the change in mass. और थोड़ी चीजें होंगी वो थोड़ी मुश्किल होंगी. Change in concentration of H2O2 because H2O2 will get used up. So the concentration of H2O2 will decrease, but it would be harder to actually measure it because you would have to sort of titrate it with something. ठीक है. So mass is probably the easy one. सर लेकिन मास किसका? इस पूरे सोल्यूशन का ना. ऑक्सीजन गैस जब निकलेगा तो उसकी मास कम होगी ना. ठीक है. जैसे ये रिएक्शन ही Mg plus HCl. So what can you do? You can measure the volume of H2 gas. So H2 gas will be increasing, right? So measure the gradient, that is rate. Or you can measure the mass of the solution. H2 gas is leaving, so the mass of the solution decreases. So you can measure the gradient and that will be the rate of reaction. ठीक है. ठीक है. अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट पार्ट कहाँ पे पहुंचे. Once the reaction is finished, ये भी हो गया था. When aqueous H2O2 is stored, there is a small hole in the lid of the bottle. So suggest why this is necessary. क्यों necessary है? ये इक्वेशन दी हुई है वैसे H2O2 मैंने ये ऊपर टॉप पे. H2O2 decomposes slowly at room temperature to give water and oxygen. तो जब इसको स्टोर करते हैं, why do you need to have a small hole in the bottle जिसके अंदर you're storing it? What could be the reason for that? रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रही है. So it will decompose and it will produce oxygen gas and that will build up pressure. So the bottle might crack under pressure to remove, ठीक है, वो O2 remove करने के लिए. अच्छा, वो हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2. Just 1 second. अच्छा, now question number 2. तो a student is given. हाँ जी. सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर और डिफरेंट सिनेरियोस कौन से हो सकते हैं? सिर्फ अपैरेटस को चेंज करके हमें दे दे. नहीं, किस तरह और डिफरेंट लाइक रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड. अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ना ये सब आ सकता है कि you might get a question on finding the order of reactions. ठीक है. तो बाकी सब कुछ तो वही है. You'll find the rate. Rate is what? Rate is 1 over time. ठीक है. You एक fixed volume बना लो कि what time would it take for 10 cm³ of oxygen gas to be produced? एक एक्सपेरिमेंट में 2 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 12 सेकंड लग रहे हैं, तीसरे एक्सपेरिमेंट में 50 सेकंड लग रहे हैं. ठीक है. सो rate is 1 over time, inversely proportional to time. So you'll find rate, right? So the दूसरा type of question है ना, which could be कि they'll change or alter the. इधर क्या कर रहा था? He was changing the catalyst, right? The other thing that you can do is you can change the concentration of H2O2. पहले मैं पानी डाल दूं, वो क्या कर dilute किस तरह करना है ना. ठीक है. तो आप पानी बीच में ऐड करते हो. ठीक है. You start diluting it. So every time the reaction would slow down. Now you know कि now how would you plot? How would you measure the order of a reaction? There are 2 ways of measuring the order of reaction. One is अच्छा, एक जो मेथड है ना वो ये कि आप ना इस इक्वेशन को ना you convert this equation in terms of y is equal to mx. You take log on both sides. The log of rate is equal to a log of
reactant concentration. ये clear है कि अगर आप इस equation का log लो, your rate equations तो familiar हो ना, paper देख रहे हो. So if you convert, if you take log, you get this equation. Is that clear? Yes, sir. और फिर आप क्या कर सकते हो? What you can do is this equation exactly looks like y is equal to mx plus c, right? So if you plot y-axis पे you plot log of rate, x-axis पे you plot log of reactant concentration, right? So m is going to be your, that will end up as your gradient, ठीक है? तो आपने ये करना है, आपने करना है, सॉरी, बस इस साइड पे ना वो आप ग्राफ ही बनाओ, लेकिन बस ये करोगे, log of rate plot करोगे versus log of reaction concentration, and you'll be able to find the order of reaction, which is going to be your gradient. Is that clear? सर ये दोनों ऑर्डर के लिए होगा, फर्स्ट सेकंड हाँ वो और gradient जीरो ऑर्डर के लिए भी? हाँ उसमें फिर जो gradient आएगा जीरो आएगा. ठीक है. ये क्लियर है ना? तो एक ये क्वेश्चन है. दूसरा मैं बताऊँ पेपर 4 में हाउ डू यू फाइंड द ऑर्डर, वो है कि हाफ लाइफ मेथड. कि आप रिएक्टेंट की एक ही एक्सपेरिमेंट करो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So if the half life is constant, that's order 1. If the half life is doubling, so that's order 2. Or if the half life is वो हर दफा half हो रही है, so that is order 0. Clear? Yes, sir. तो उस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो जिस मेरे ख्याल से इस पेपर के अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं. A student is given 250 cm³ solution containing a mixture of Fe2 plus and Fe3 plus. The student is asked to find the total mass of iron ions and the percentage per mass of iron 3 plus by performing titrations with KMnO4. ऐसे ही कह रहा है. So he's given Fe3 plus and Fe2 plus. The student is asked to find out. एक second. A student is asked to find out Fe2 plus Fe3 plus. So he's asked to find the total mass of iron ions and the percentage by mass of Fe3 plus by performing titrations with KMnO4. KMnO4, remember, is an oxidizing agent. So KMnO4 would probably react with, KMnO4 would react with Fe2 plus, not with Fe3 plus. Because Fe3 plus does not get oxidized. Further oxidation state नहीं होती, ठीक है, not with Fe3 plus. So this is your mixture, ठीक है, that's your mixture. So your KMnO4 is being titrated. So then he says that the Fe3 plus ions can be reduced to Fe2 plus by reaction with zinc. तो वो कह रहा है zinc डालो ना तो the Fe3 plus, like if you add zinc, then your Fe3 plus will get converted to Fe2 plus. So calculate the mass of KMnO4 needed to make this much KMnO4. So either moles का question है, so find out कर लो कितना होगा. That's moles is concentration times volume, 0.02 times 500 divided by 1000 times the MR. Moles into MR is mass. So what is the MR of this thing? It's K, that's 39.1. Mn is 54.9. ये दिया हुआ है, ठीक है. MnO4, 64. These are the what is the mass that we're getting? 1.58 grams. Okay, so we're getting 1.58 grams. The student uses a balance accurate to 2 decimal places. Calculate the percentage error in weighing the mass of KMnO4 by difference. अब बताओ कि if you're measuring 1.58 grams and he's saying the balance is accurate up till 2 decimal places, what is your smallest graduation? 0.01. ठीक है. So your 2 decimal place वाला जो balance है ना,
that has a smallest graduation of a 2 decimal place balance is 0.01. What is your error then? Error क्या होगा? Error Divide by 2. Divide by 2. ठीक है? Error is the smallest graduation divided by 2, right? So that's your error in one reading. ठीक है? Remember, mass is always measured by taking a difference. It's always measured by taking a difference. क्योंकि आप क्या करते हो कि bottle होती है empty, उसके that's your initial mass. फिर bottle plus KMnO4 होता है, ठीक है? तो दोनों का difference लेते हो, right? So when you take a difference, what happens to the error of the two masses? इसका measure करोगे ना mass of empty bottle. फिर mass of empty bottle, mass of bottle plus ये जो भी वो weighing bottle, ठीक है, plus KMnO4, right? So let's say ये आ रहा है that's coming out to be 2 grams, 2.00 grams. तो तो अगर 1.58 है, so that's going to be what, 3.58 grams, right? So this is how you always measure the mass. It's going to be a difference, ठीक है? And then you're going to get a difference of 1.58. So that's your KMnO4. Error कितना है इसमें? मतलब एक वैल्यू में जो error है ना, that's 0.005. What happens to error when you add or subtract two things? Error adds up. So error add up हो जाएगा. So in this case, the error will be 0.005 plus 0.005. क्योंकि इसके अंदर भी it's going to be plus minus 0.005, right? और इसके अंदर भी it's going to be plus minus 0.005. तो जो वैल्यू होगी ना, उसके अंदर जो एरर होगा that's going to be 0.01, sorry. यानी वो वापस वही बन जाएगा. तो what's percentage error? That's जिसके अंदर clearly बताना है कि इस मार्क जो होगा ना, उसके अंदर वर्किंग में होगा 0.005. आपने you have to show कि 0.005 multiplied by 2, that's your error. यानी उसको जब शो करोगे ना पेपर के अंदर, उसको इस तरह शो करना 0.005 multiplied by 2. So error over the actual value, which is 1.58 times 100, तो निकल आएगा जो भी आ रहा है, ठीक है? तो मुझे बता दो कि क्या आ रहा है. और फिर अगला part, so that's your percentage error. Now the student noticed that some crystals of KMnO4 were stuck to the weighing board after adding, मतलब यहाँ पे वो empty bottle ही weighing board होना चाहिए था. Adding KMnO4 solid to the beaker. State how the student should modify the instructions to ensure that the measured mass of the KMnO4 was accurate. तो वो कह रहा है कि पीछे बॉटल में ना कुछ स्टक पीछे रह गया क्रिस्टल्स. मतलब अब इस एक मार्क क्या कर सकते हो आप? I mean, there's several things you can do. Yeah, how can you be more accurate? Because now this way you're not going to be this accurate. So what you'll do is, नहीं, after residual के डालने के बाद ना, measure the mass of the weighing board plus residual जो पीछे रह गया ना, residual KMnO4. इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है? So that will give you a more accurate value. So how the student should modify the instruction to ensure that the measured mass of KMnO4 is accurate? To use empty bottle subtract the weighing board plus the residual KMnO4. Is that clear? Sir, weighing board means? वही empty bottle ना. ठीक है. ठीक है.
Give two additional instructions that should be given to the student to ensure that the solution is prepared as accurately as possible. Solution, अच्छा solution बनाते किस तरह पहले वो इधर से पता लगा लेते हैं कि how do you make a solution. वो जो KEMRO4 का 1.58 gram solution नहीं था 500 cm cube. So how do you actually make a solution? यहाँ पे वो पूरी instructions है. Solution किस तरह बनाते हैं? You take 1.58 grams KEMRO4, right? Once you've taken that 1.58 grams KEMRO4, you put it in distilled water, you stir it. तो पहला source of error क्या हो सकता है? कि stirring के अंदर it doesn't fully dissolve. ठीक है? तो solution बनाते हुए the first source of error वैसे हम common sense use करें. ज़्यादा paper common sense, remember that. So the first source of error is that during your stirring process, ensure that your KEMRO4 completely mixes. ये clear है? सर मतलब coagulation नहीं होनी चाहिए. हाँ मतलब वो dissolve ही नहीं हुआ तो फिर तो वो उसका मतलब वो solution में तो गया ही नहीं है ना. अच्छा second, जब उसको you add it or mix it in distilled water, then you transfer it into a volumetric flask and you fill it up till the 500 cm cube or whatever the mark is, right? तो उसके बाद फिर you have to जब इसमें डालते हो make sure that the stirrer is washed and the beaker is washed and the washings are also added into the volumetric flask. पीछे कुछ रह ना जाए, ठीक है? तो ये उसने खुद भी ये मार्किंग स्कीम में इंस्ट्रक्शंस थी जो which are written over here कि भाई stir thoroughly करना, stir the mixture with a glass rod until you have to ensure that all of it is dissolved. You have to wash the beaker with distilled water and transfer the washing to the volumetric flask. Glass rod को भी rinse करो distilled water से and transfer the washing to the volumetric flask so that ensure that पीछे कोई भी KEMRO4 पीछे ना रह गया. ठीक है? So two things. Those are your two things. Is that clear? Yes sir. अच्छा अब ये कि और क्या हो सकता है? बस यही है. एक जो लास्ट पार्ट हो सकता है ना प्रॉब्ली इसको शेक करना जैसे ये एंड में लिखा है द फ्लास्क थॉरली, राइट? ये बिल्कुल लास्ट. तो इधर भी इंश्योर करना कि it's completely mixed. ठीक है? So that could be another thing. अच्छा फिर next one. When the KEMRO4 is ready to use, the student is given additional instructions. Fill a burette with KEMRO4. तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि the top पे there's a burette of KEMRO4 filled with 0.02 mole per dm cube. Using a measure cylinder, transfer the Fe3 plus Fe2 plus solution into a conical flask. So यहाँ bottom पे ना you've got a mixture of Fe2 plus and Fe3 plus at the bottom. अब ये कि add 10 cm cube of sulfuric acid. इसके अंदर वैसे ही वो acidified होता है KEMRO4, so the sulfuric acid is kind of irrelevant. ठीक है? ये जो sulfuric acid होता है ना redox मतलब KEMRO4 K2Cr27 organic chemistry, they have to be acidified. ठीक है? That's when they react. तो ये तो वैसे ही पता होना चाहिए. Now using so he says do the titration, repeat titration until the titers are concordant. ठीक है? Remember, you keep on repeating titrations until your two values are within 0.1. This is set of results set A. तो ये titration से किसके moles पता लगेंगे? I think it's Fe2 plus, right? Fe2 plus इसके साथ react कर रहा है. He then says that using a measuring cylinder, add 100 cm cube step 6. अब step 6 is probably another reaction. यहाँ पे ना the first reaction has happened, which is this one. Done. You've taken titration readings. Then he does something else, step 6. He uses a measuring cylinder, adds 100 cm cube of Fe3 plus Fe2 plus solution into a beaker and adds excess zinc. उसने zinc के बारे में ना start में बताया था कि what does zinc do? It turns the Fe3 plus back into Fe2 plus, right? So now what has happened is
कि आपका जो सोल्यूशन है ना उसके अंदर there's no more Fe3+ because once you add zinc, now this is a separate experiment. The Fe3+ has now been converted into Fe2+. So he filters the mixture, transfers the filter into a conical flask, sulfuric acid डाला, फिर से titration की. So basically he's doing two titrations. One is with the original solution that contains Fe2+ and Fe3+. And then he repeats. जब वो repeat करता है ना तो वो पहले उसको zinc के साथ react करता है so that there's no more Fe3+. All the Fe3+ has been converted to Fe2+. ये जो second titration होगी ना उसके अंदर the amount of KMnO4 used will be more. क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना Fe2+. Is that clear? पहली titration में KMnO4 used would be less. In the second titration, the amount of KMnO4 used will be or required will be more. ये बात clear है? No. नहीं देखो पहली titration में Fe2+ Fe3+ दोनों पड़े हुए हैं ना फ्लास्क में. Let's say 10 ही है और 10 Fe3+ है. KMnO4 के साथ जाकर रिएक्ट करेगा. It's going to go and react with Fe2+. ये बात क्लियर है कि ये टाइट्रेशन है. जी. फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेप 6 में वो कह रहा है रिपीट कर रहा है. The whole thing is repeated. वही टाइट्रेशन, everything is repeated. But now वो जो solution है ना mixture Fe3+ Fe2+ में what he's done is he's added zinc to it. Zinc का क्या रोल था? उसने स्टार्ट में बताया था zinc का रोल कि zinc क्या करता है. उसे यहाँ पे बताया था कहीं कहीं तो बताया था ये यहाँ पे कहीं. सर उसने नीचे भी बताया रिडक्शन. हाँ लेकिन यहाँ पे हाँ उसे students told that the Fe3+ can be reduced to Fe2+ by the reaction with zinc. Is that clear? Yes sir. तो अब अगर तो जिंक डालते हैं इसमें और फिर दोबारा रिपीट करता है तो जो 10 Fe3+ है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? Fe2+ पर. तो यानी वो 10 तो खत्म हो गए लेकिन Fe2+ कितने हो गए? अब 20 हो गए राइट. जी. तो अब ऊपर जो KMnO4 डालोगे वो ज्यादा डलेगा ना क्योंकि you now have more Fe2+. Is that clear? जी. तो वो नंबर्स तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए दिए थे. तो शुरू में Fe2+ कम था बट नाउ इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट द सेकंड वन where everything gets repeated but लेकिन बीच में he added zinc. So now your titration result it will use up more KMnO4. ठीक है. तो how should the burette be prepared for use? अच्छा बताओ KMnO4 burette में डालना है तो burette को साफ कैसा करोगे? burette की सफाई किस तरह करते हैं? किससे रिंस करोगे? burette का ना ख्याल रखना. burette में दो चीजें हैं. चलो ठीक है. हाँ मतलब उसमें है कि पहले तो उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना. ठीक है. आफ्टर वॉशिंग rinse with KMnO4. एक और चीज भी है इसमें rinse with KMnO4. that's not it. जिस चीज से यूज कर रहे हैं ना उसी चीज से आपने उसको वॉश करना है. ठीक है. rinse with KMnO4 and throw the washings. ठीक है. और दूसरा क्या है? जब burette को प्रिपेयर करो ना हमेशा मेक श्योर कि रन some solution. ठीक है. so that air is not trapped in the tip. थोड़ा सा उसको फ्लो होने देना. ठीक है. वरना ऊपर से जब आप भरते हो ना तो ये जो टिप है ना ये burette ये है. ठीक है. लेट मी शो यू. अच्छा तो इसमें ना if you don't अच्छा if you don't run it तो आपकी जो
टिप होगी ना, खासकर यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे जो बोर है, थिन बोर हुए है, that will have a lot of air trapped in it, ठीक है? तो उससे फिर रिजल्ट्स इनएक्यूरेट आएंगे, क्योंकि आप ओपन करोगे पहले एयर निकलेगी बाहर, ठीक है? Is that clear? Yes, sir. अच्छा, what must be done to ensure an accurate endpoint titration? How do you ensure कि titration का जो end point है ना वो accurate है? मतलब क्या करना है उसके लिए? Indicator. ये कौन सा? Indicator. नहीं, इंडिकेटर तो नहीं चाहिए. What can be done to ensure an accurate end? Well, titration में क्या करते हैं? Simple क्या है titration? How do you perform a titration accurately? कलर चेंज तो होता ही होता है. कलर चेंज केमनोफोर में वैसे ही होता है. कलर चेंज केमनोफोर में, व्हाट इज द कलर चेंज? इफ दे आस्क यू द कलर चेंज, केमनोफोर का जो एंड पॉइंट है ना, इट टर्न्स पर्पल, ठीक है, और पिंक. केमनोफोर when it reacts it turns colorless. So as long as it's reacting it will continue to turn colorless. जैसे वो आखिरी drop and it's got nothing to react with, it will remain pink and you'll see a pink drop at the end, ठीक है? देखिए अभी ये सिंपल बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. टाइट्रेशन, अच्छी टाइट्रेशन में आप क्या करते हो? यू वांट गुड रिजल्ट्स. Neutralization. नहीं, सिंपल टाइट्रेशन में आप क्या करते हो? आप उसको ऐड स्लोली ड्रॉप वाइज. बट ड्रॉप वाइज आपने ऐड करना है बहुत स्लोली. वो कह रहे हैं एंड पॉइंट रीच करना है ना, एंड पॉइंट एक्यूरेटली. अगर आप तेजी से करोगे तो यू माइट क्रॉस द एंड पॉइंट. इज दैट क्लियर? नहीं, उससे असल में कहा है रिपीट से तो रिलायबल रिजल्ट्स है ना, वो तो बस वो बड़ा स्पेसिफिक है. सेइंग what must be done to ensure as accurate an endpoint as possible? Like how can you ensure you're close to the endpoint? So the only way you can be certain that you're close to an endpoint is that you're doing it very, very slowly. अगर वो reliable कहता ना कि how do you ensure reliability, then it's you repeat, which he is repeating. Identify an experiment weakness and explain how this would affect the results. Step 2 के अंदर तो experimental weakness, ये कौन सा स्टेप है? स्टेप 2 में ये स्टेप 2, what is the weakness over here? Experimental weakness. Measuring cylinder is your measuring cylinder is not accurate. How would you improve this weakness? 25 cm cube किस चीज से measure करोगे? So that's going to be a pipette. नहीं, burette नहीं, pipette. Flask के अंदर pipette से measure 25 cm cube is usually measured using a pipette. तो बस how could this weakness be overcome? ठीक है. अच्छा, you're given these data, तो इसके मुझे बस ये रिजल्ट्स बता दो टाइटल के. What is this first one? $17.75. सारे बता दो. This one is what, 17.1? नहीं, 1, right? Yeah, it's 17.1. What is this? 34 minus 17 is, I think, also 17.3. 0.3. ये क्या होगा? 17.05? Yeah. अच्छा, इनमें से which ones are your concordant results? 1 and 3. नहीं, 1 and 3 are not concordant. Sorry, 1 and 3. Oh, I thought 2 and 4. ठीक है, that's 1 and 3. It's labeled 1 and 3. अगले का बता दो. The second set. 44.85. 85. ठीक है, 43. 43.65. And 43.6.
Okay, those are your concordant results. So completed table average titer for each set of results. Student could not carry out titration number 3. Why did he not carry out titration number 3? Was he already got concordant results. That's why you don't continue titration after that. So average निकालो 17.1 divided and 17.05. What's the or 1 decimal place तक ना? तो 1 decimal place तक क्या average होगी? That's going to be 17.1 ही आएगा. I mean, it's going to be 17.75. Sorry, 17.075. But that's going to round off to. और इसका क्या आएगा? I think 43 point. कितना आ रहा है इसका? ये अच्छा ये गलत लिखा है मैंने 45 है. What is the average over here in दोनों की? That's अगर round करो that's going to be 43.5. Is that clear? Yes, sir. अच्छा फिर क्योंकि उससे ये हाँ 6 to 5 है लेकिन ये चीजें याद से देख लेना कि instructions follow करना है 1 decimal place. ठीक है, make sure. So 1 decimal place is going to be 43.5. Next part is the reaction taking place during the titration. He's given you the Fe2 plus MnO4 reaction. Calculate the mass of Fe2 plus in 100 cm³ of the reduced solution produced in step 6 by using the appropriate average titer. So KMnO4 ka we knew the concentration. Kitni thi concentration KMnO4 ki? It was 0.02 mole per dm³. So कहाँ गया? अच्छा. So it was the concentration was 0.02 mole per dm³. And the volume, remember he's talking about the reduced solutions. The volume used was कितना आया था KMnO4 burette reading? That was 43.5. It said B second reaction rate was coming out to be 43.5. So find the moles of KMnO4. Concentration times volume divided by 1000. कितने moles आ रहे हैं? .00087. एक और zero? Yeah, 3 zeros and then 87. So according to this, it's Fe would be 5 times this, right? So multiply this by 5, you'll get what? .00035. Achha, but remember, these moles are not in 100 cm³. ये जो moles थे ना, ये titration में how much? What is the volume that you're using? You're using 25 cm³. So these moles are in 25 cm³. So वो जो 100 cm³ solution you prepared, that will have titration में तो आप 25 use कर रहे हो ना, so that's going to be multiplied by 4. मतलब ये जो moles है ना, this is in 25 cm³. So in 100 cm³, it's going to be 4 times more. So इसको multiply कर दो 4 से, so what do you get? 0.0174. तो ये खैर आपके moles आए Fe2 plus के, ठीक है? In the 100 cm³, right? Is that clear? Yes, sir. और अब ये कि calculate the mass of Fe2 plus. अच्छा इधर उसने mass मांगी थी actually. अब moles को mass MR 55.8 इधर दिया हुआ. So multiplied by 55.8 so that we find the कितनी mass आ रही है?
क्या किसी ने कैलकुलेट 0.970. three significant figures 0.970. अच्छा, No, it's that's actually hmm? 0.9709. So 0.971. अच्छा 971, ठीक है, grams. अच्छा, then he's saying calculate the mass of Fe2 plus in the original sample using the appropriate average titer from 2. अच्छा, so either वो reduced है ना, इसके अंदर क्या हुआ था कि even the Fe3 plus got converted into Fe2 plus. मतलब you had Fe3 plus and you had Fe2 plus, लेकिन even the Fe3 plus got converted into Fe2 plus. अब वो कह रहे ओरिजिनल सैंपल में क्या था, कितना यूज हो रहा था कैमरा फॉर, इट वाज 17.1. तो मतलब ये सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, which is so in the original sample the MnO4 that was used was 17.1 cm3. तो वो उसकी MnO4 की concentration क्या होगी, that's so I think you have to do all of this again. 17. हाँ जी, How did you know in part 2 you had to use set B and not set A? क्योंकि उसने कहा था स्टेप 6 के बारे में, वो कह रहा था Oh, in okay. the reduced solution. Oh, ठीक है, okay, okay. now he's talking about the original solution, so that's the first part. मतलब जो पहला पार्ट था ना, वो था ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, एंड देन ही एडेड जिंक, पार्ट 6 से ही डिड इट फॉर अ रिड्यूस्ड सॉल्यूशन, ठीक है. तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कहाँ तक हम पहुंचे. So I think we have to do all the calculations again because now the KMnO4 used is 17.1 cm cube. The KMnO4 has the same concentration, that's 0.02 mole per dm cube. तो आपको KMnO4 के moles आ गए, Fe के moles जो होंगे that's going to be divided by 1000 भी करो इसे, ठीक है. So those are your moles of KMnO4. The moles of Fe will be 5 times. According to the equation, it's going to be 5 times more. So आपको ना वो solution में ना कितना आ रहा है volume? The moles are 0.00171. 0.00171. Yeah. अच्छा, लेकिन ये जो moles है ना, these are your moles in this flask over here, 25 cm cube, right? तो जो आपका original solution था ना, that had a volume of 250 cm cube, I think. वो start में दिया हुआ था, हाँ. तो ये जो 25 cm cube था ना, that was taken out of this 250 cm cube solution. तो अगर 25 cm cube में you're getting these many moles, right? So the original solution, which is 250 cm cube, how many moles would that have? That's going to be, it's x cross multiply, so it's going to get multiplied by 10. तो क्या बनेगा? That's 0.0171 moles बनेंगे ना. कि 25 में इतने थे, तो 250 में it's going to be x, right? ठीक है. Yes. और mass निकालो इसकी, क्या ये mass multiply by 55.8. 0.954. अच्छा, so you're getting 0.954. 954. So you're getting 0.954 grams, right? So that's calculate the percentage of mass of Fe3 plus ions in the original sample of 250 cm cube. तो अब आपका जो 250 cm cube solution है ना, ओरिजिनल, उसके अंदर Fe2 plus का तो आपको पता लग गया. That's what 0.954 grams, right? Fe3 plus उस पे कितना है? वो हमें जाके ना पहले देखना पड़ेगा, ये जो सेकंड पार्ट में ना, अच्छा वो, अच्छा यहाँ पे उसने कंफ्यूजन अजीब ही उसने ना खिचड़ी बनाई हुई है यहाँ पे. इधर ना उसने he took the same 250 cm cube solution but
he took 100 cm cube of that solution, right? तो यहाँ पे ना we had found out तो पहले इसको extrapolate करना पड़ेगा क्योंकि this is the same solution but it's a 100 cm cube solution. Is that clear? Yes, sir. तो अब हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हमने we figured out कि our original solution had this much Fe2 plus, right? जो हमारा 100 cm cube of reduced solution था ना उसके अंदर how much Fe2 plus did we have? We had 0.97 ये था ना 0.971 grams, right? इसको पहले एक्सट्रैपलेट करो जरा कि अगर ये 250 cm क्यूब आप लेते तो कितनी मास आती है Fe2 प्लस की? मतलब into 250 divided by 100. 2.427. So you're getting 2.427 grams, right? तो ये क्लियर है ना कि वो जो सेकंड पार्ट में जो उसने लिया था, it was this. He just took a 100 cm cube, but it was the same original 250 cm cube solution, right? So the second part when we found out 100 cm cube you had this much, so it was basically coming from the same 250 cm cube solution. So we extrapolated it and we found out कि भाई वो जो अगर reduced होता ना तो 2.427 grams होता, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वैसे ओरिजिनली Fe2 plus 0.954 grams था, लेकिन वो जो जिंक वाला था ना रिड्यूस वाला उसके अंदर इट्स कमिंग आउट टू बी 2.427 grams. तो ये जो एक्स्ट्रा मास आई है ये किसकी आई है? ये आई है Fe3 plus जो रिड्यूस हुआ है. इन दोनों का डिफरेंस निकालो क्योंकि वो बाकी जो होगा वो तो Fe3 plus that got reduced to Fe2 plus, right? तो find out the difference between the two. That is your mass of Fe3 plus. So क्या डिफरेंस आ रहा है? मतलब ये लेकिन क्लियर है ना कि रिड्यूस के अंदर वो जो एक्स्ट्रा Fe2 plus आया that came from Fe3 plus. Yes, sir. तो बताओ कि कितना Fe3 plus था फिर? 1.473. कितना 1. 473. अच्छा, so that's 1.473 grams, right? और अब फाइनली क्या करना है? calculate the percentage by mass of Fe3 plus. तो यानी जो पूरा 2.427 grams है ना, just मतलब 0.954 is Fe2 plus, so उसका Fe3 plus is actually this is Fe3 plus plus Fe2 plus. और उसका Fe3 plus कितना है वो ये आ रहा है. So you multiply it by 100 and you'll find the percentage. तो फाइनली वो आ जाएगा आपके पास. You'll find the percentage. Is that clear? Yes, sir. Yes. State what change could be made to the procedure to enable titration 3 to be carried out in set B. अच्छा, एक तो पहली बात है कि मतलब why did we was titration number 3 necessary or not necessary? Not necessary. Necessary तो नहीं थी. नहीं, क्यों necessary नहीं है? क्योंकि reliable results मिल गए थे इसलिए. नहीं मिले थे. 0.1 का डिफरेंस होता है ना, that is concordant results. This is not 0.1. उसने पहले स्टॉप कर दिया, ठीक है? मतलब 0.15 का डिफरेंस है, that's not concordant. That's almost concordant but it's not concordant, ठीक है? Is that clear? So he should have done it third titration, right? Is that clear? Yes, sir. तो अब दोबारा से इसका बहुत ही stupid सा आंसर होगा वैसे. Why is he not doing titration number 3? क्या रीजन है वैसे? सोचो, why is he not doing titration number 3? He's not doing titration number 3 क्योंकि solution खत्म हो गया.
सोल्यूशन था कितना टोटल? 100 cm क्यूब था ना, वो जो 250 cm क्यूब नहीं था जो ओरिजिनल था, उसके अंदर से he took out 100 cm क्यूब and he reduced it. तब वो 100 cm क्यूब के साथ he can't do 4 titrations. He can only do 3 titrations. Is that clear? So you should have taken out more than 100 cm cube. So you clear last एक mark, ठीक है? Is this clear? Yes. जी सर। अच्छा चलो ठीक है, चलिए कल फिर हम ना आफ्टरनून में ना एक क्लास रख लेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।